variations may or may not help organisms to survive. So it's not a compulsion that all variations will be helpful for the survival or will pass to the next generation. And it's also not a compulsion कि सारी variations फायदे के लिए ही होती है organisms के. There are variations which occur by chance or they may not pass to next generation. ठीक है, जैसे first of all, if variations will help organisms to survive, so there is an example given in your book regarding the beetles. First of all, the beetles are of red colors, red colored. Beetles आपकी red color की होती है. Now we all know that beetles, they survive, they live in green bushes or they live in bushes. अब beetles red color की है, bushes green color की है, तो क्या होगा? They will be easily seen by the crows. They will be easily eaten by the crows or its predators. लेकिन अगर उनमें variations आ जाए, if they would change into green color, then what would happen? They won't be visible to crows and they will not be eaten by them. So then gradually what would happen? The population of red beetles decreases. Red beetles की population धीरे धीरे decrease होती जाएगी. And the population of the green beetles increases. और green beetles की population बढ़ती जाएगी. क्यों? क्योंकि red beetles अब predators आते जाएंगे, उन्हें खाते जाएंगे, वो खत्म होती जाएगी. और green beetles का advantage है that they will camouflage the background and they will be survive. So this variation help the organisms to survive. That means variations होती हैं, changes होते हैं, helpful है भी और नहीं भी. यहाँ पर हमने कौन सा example discuss किया? Variations which help organisms to survive. Now another condition that some variations do not help organisms to survive. Now for example here, now during sexual reproduction a color variation occurs in red beetles and some blue beetles produced. अब क्या हुआ कि red beetles थी पहले से, अब उनमें ऐसा चेंज आया, ऐसी वेरिएशन आई जिससे वो रेड बीटल्स में से कुछ बीटल्स ब्लू कलर की हो गई. नाउ बोथ द रेड एंड ब्लू बीटल्स आर विजिबल टू क्रोज एंड ईटन बाय देम. अब दोनों ही बीटल्स, चाहे वो रेड है, अब जो नई बीटल्स आई ब्लू, दोनों ही विजिबल होंगी ग्रीन बुशेस में एंड दे विल बी ईटन बाय द प्रीडेटर्स. देन द पॉपुलेशन ऑफ बोथ रेड एंड ब्लू बीटल्स डिक्रीजेस. तो इस कंडीशन में क्या होगा कि कलर चेंज का यानी वेरिएशन का कोई बेनिफिट बीटल्स को नहीं मिल रहा है. जैसे रेड बीटल्स खत्म हो रही थी, ये रेड बीटल्स एज अ प्रे थी क्रोस के लिए, सिमिलरली ब्लू बीटल्स विल बी. So this kind of variation does not help organisms to survive. That means variations, these are just changes that may occur in the chromosomes or in the genes, but it's not a surety that they would help the organisms to survive. Now another condition, acquired traits cannot be passed from one generation to the next. Now first of all, let's discuss about acquired. Acquired means that we learn, that we get through our lifetime. वो चीजें जो हम अपनी lifetime में सीखते हैं या हमारी body में जो changes आते हैं during our survival, during our lifespan. Those kind of changes, those kind of features are called as acquired traits. इन features को हम क्या नाम देते हैं? Acquired traits. Okay, so if now example here is that if the population of beetles increases and plants are affected by diseases, अब मान लीजिए कि population है beetles की वो बढ़ती जाए, then what would happen? First of all, they would require more food. Secondly, अगर ऐसी condition हो जाए कि plants जिन bushes में वो survive कर रही थी, they would be affected by some diseases. मान लीजिए उसमें कोई बीमारी हो जाए, जो plants थी, जो bushes थी, वो धीरे धीरे खत्म हो जाए. Then the food available for the beetles obviously will decrease and their body weight also decrease. अब क्या होगा, जो खाना available था beetles का वो कम हो जाएगा. इससे क्या होगा, कम खाना मिलने की वजह से उनका body weight decrease होगा, कम होगा. If after a few years the availability of food increases, then the body weight of the beetles also increases. अब क्या हो, मान लीजिए कुछ सालों बाद या कुछ महीनों बाद, what would happen? अगर food availability वहां पर बढ़ जाए, यानी कि वो bushes में अब कोई बीमारी नहीं है, कुछ नए plants आ जाए, नई bushes आ जाए, तो क्या होगा, body weight beetles का भी increase हो जाएगा, बढ़ जाएगा. Now what kind of change is this? अब ये क्या था कि एक बार change आया फिर वापस पहले जैसा हो गया. Why? Because this is the kind of change which has occurred only in the body, not in the genes or the chromosomes. So this is what we call as acquired trait, which does not pass to
next generation. So these are the traits which cannot be passed from one generation to the next, because this is the change which occurs only in the body, not in the chromosomes. Chromosomes में gene या DNA में कोई change नहीं आता. So these are what? These are the different conditions when variations would pass to next generation or not. Variations will pass to next generation only in the case if there is a change in DNA, but not in the body या body structure में कोई change आ रहा है, जैसे weight increase होना, decrease होना, like hair length. So these are the changes which we are getting in a lifespan. आपने hair cut करवाया, फिर से वो बढ़ जाएंगे. So these are what? These are acquired traits. आपने straightening करवाई है, that means this is the kind of change. अब फिर से आप पहले जैसा हो सकता है, because these are the changes which does not occur in DNA. Okay. Now another important concept here, speciation. Formation of new species from existing species. As the name indicates, speciation, yani species generation. So the formation of new species from existing species is mainly due to one or more of the following factors. Speciation word का ही मतलब है नई species का बनना existing species से, यानी जो पहले से species है उसमें से नई species का generation speciation कहलाता है. Okay? And this is done because of various factors. अब नई species बहुत से factors की वजह से generate होती है. First of all, accumulation of variation, जैसा कि हमने अभी green beetles के बारे में पढ़ा, variations आना. Physical barriers, genetic drift, natural selection and migration. These are the main factors which actually leads to new species generation. And this new species generation from the existing one is also known as एवोल्यूशन. एवोल्यूशन का मतलब ही यही होता है कि नई नई चेंजेस आते रहना, नई नई स्पीशीज बनती जाना और पिछली खत्म होती जाना, या पिछली कुछ खत्म हो जाए और कुछ नई बन जाए, तो इसे हम एवोल्यूशन का नाम भी देते हैं. सो अगर आप ये 5 फैक्टर्स समझ लीजिएगा, यू वुड एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एवोल्यूशन एज वेल एज द रीजन बिहाइंड. फर्स्ट ऑफ ऑल, accumulation of variations. The differences between the individual of same species is called variations. The accumulation of variations over several generations produce new species. That means differences between individuals of same species is called variations. Like we have just discussed, if there is change in DNA, if they get accumulated within the species, within the generations, we call it a new species. Second is physical barriers. Physical barriers means like, for example, अगर हम इस beetle की ही बात करें, मान लीजिए वो इनमें से कोई एक beetle, if that has passed to some other place, मान लीजिए वो एक mountain cross करके दूसरी तरफ चला जाए, so what would happen? So with the time being क्या होगा, अब जो पहले से beetles थी उनमें कुछ changes आएंगे, और जो mountain cross करके दूसरी तरफ चला गया उसमें कोई different changes आएंगे. So this will lead to the new kind of generation in both the beetles, जिससे क्या होगा, दोनों में इतना difference आ जाएगा that they would become different species. Next is genetic drift, like natural calamities or introduction of new members of the same species in an area can produce changes in the gene pool of the population, and new variations are produced which can produce new species. Now again, this is a kind of variation. अगर आपकी धीरे धीरे variations आती जाए, धीरे 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 धीरे, that will cause to genetic drift. Drift means like घसीटना किसी चीज को, तो genetic drift यानी धीरे धीरे genes में change आते रहना, which may lead to new species generation. Next is natural selection. So natural selection, as the name indicates, when nature selects only those individuals of a species which have useful variation and can adapt to the changes in the environment, survive when the others die. यानी जो changes या जो individuals nature के according है, only they will survive and others would die. अब आपकी बुक पे एक एग्जांपल बीटल्स वाले देख लीजिए, लाइक एलिफेंट फूड का वहां पर प्रिंट है, मान लीजिए कुछ बीटल्स पर उसने पैर रखा,
वो वाली सारी खत्म हो जाएंगी and others would survive. This is a kind of what? Natural selection. या environment के according, जैसे आपके dinosaurs थे, they extinct because they were not able to adapt themselves to the change in the environment. So if the organisms, they can adapt themselves to the change in the environment, they would survive and others obviously would die. And the last is migration. This migration and physical barrier, this is similar kind of factors. Some individuals of a species may migrate to a new geographical area and adjust to the changes in the environment there and develop new variations and produce new species. Like you must have heard about migratory birds. Just what happens sometimes if they move to a new place and they would find that place more suitable, then they would stay there and will have the adaptations according to that area. So they would develop new features, new variations, and slowly and steadily it would lead to new species generation. I hope you all have understood the factors behind speciations, and these are the same factors which actually leads to evolution. So these gradual changes taking place in the living organisms, giving rise to new organisms due to changes in their genetic composition is called evolution. ठीक है, वही बात है कि जब gradual धीरे धीरे जो changes आ रहे हैं living organisms में, जिसकी वजह से new organisms बनते हैं नई genetic composition के, उस process को हम evolution का नाम देते हैं. Okay? Now another important concept here to learn is that inherited and acquired traits. आपका इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और आपका इस बार भी है ये सिलेबस में, इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड ट्रेट. अब इनहेरिटेंस हम पढ़ चुके हैं, दैट मींस ट्रांसमिशन ऑफ फैक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. नाउ इनहेरिटेड ट्रेट्स, दैट मींस द ट्रेट्स in an organism due to changes in the genetic composition, and it can be passed from one generation to the next. That means the traits which passes to one to next generation, they are called as inherited traits, and obviously these would pass if there is change in DNA. और ये कैसी traits होती है? They are just because of the genetic composition, they are just because of the different genes. तो वो traits जो हमारे genes की वजह से उन्हें हम क्या कहते हैं? Inherited traits. और जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, genes पास होते हैं एक generation से दूसरी generation में, so obviously these traits also passes from one generation to next. सेकेंड है आपका एक्वायर्ड ट्रेट्स. अभी हमने जैसे बात की थी, एक्वायर्ड यानी सीखना, लर्न करना. सो दीज आर द ट्रेट्स व्हिच आर एक्वायर्ड, व्हिच आर एक्चुअली लर्न्ड बाय द ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, एंड दीज ट्रेट्स कैन नॉट pass to next generation because these are the kind of traits which are not occurring in DNA. और क्योंकि सिर्फ DNA एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है, तो ये ट्रेट्स भी एक से नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाते. क्लियर? आपका इनहेरिटेड ट्रेट्स का एग्जांपल आ जाएगा आपका आई कलर या आपका लाइक हाइट, बट एक्वायर्ड लाइक प्लेइंग ऑफ गिटार और रीडिंग, राइटिंग, दीज आर व्हाट? एक्वायर्ड ट्रेट्स. Another example I just want to add here is that like inherited traits आपको आपके पेरेंट्स से जो फीचर्स मिल रहे हैं, acquired trait का like for example मान लीजिए like there was an injury in your finger, अगर किसी की फिंगर में इंजरी हो जाए, कट लग जाए या फिंगर कट जाए, so it won't pass to next generation. ऐसा नहीं होगा कि उस जो next generation होगी उसकी फिंगर भी कट होगी. Why? Because this is what acquired trait. Similarly अगर मान लीजिए लाइक हम हमेशा बात करते हैं कि एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है या एक सिंगर का बेटा सिंगर, बट इट्स नॉट अ कंपल्शन बिकॉज दीज आर नॉट द ट्रेट्स व्हिच आर एक्चुअली इन देयर डीएनए. सो ऐसा नहीं है कि अगर कोई बहुत अच्छा क्रिकेट प्लेयर है तो उसके बच्चे भी बहुत अच्छे क्रिकेट प्लेयर होंगे, बिकॉज दीज आर एक्वायर्ड व्हिच वी एक्चुअली लर्न ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम. I hope you all have understood the difference between inherited and acquired traits. Next time we will discuss about evidences of evolution, जिसमें आप homologous organs, analogous organs और fossils के बारे में बात करेंगे. Okay? So